speaker is Mr. Syed IRFAN BUKHARI, sir. He's postgraduate in IT, 20-year field experience, and he had installed 500 above solar pump installed and commissioned with last year. And currently is managing director of CIAP, Surgiment and Adler. Now his topic is advanced solar power pumping in space heating system. I will give him, thank you, sir. Thank you very much. First of all, very good afternoon to all of you. In fact, we had a small experience last year also. We had given a small presentation here. And I want this time more enthusiastic students who can really learn and transfer the knowledge in the field and help the society and your close ones back with your inputs and with your skills. So, as the topic says, solar power, and we want to emphasize on the renewable energy most. And why I am here is because of my experience of 20 years, and I was very jubilant to see some of my products still working in your lab, like Blue Star Cold Room we had given 20 years back, almost 17 years back. Some of the moisture analyzers, some of the pantometers we had given that time. But last year we commissioned around 500 solar pumps. And it was something very close to my heart when I see people getting jubilant, they getting water first time in their life. And I say first time in their life means that they had not seen water in their houses. They had not seen water in their properties. They had seen water first time because of the solar power. I'm talking of some of the case studies. We will show you the video of those case studies as well. And we will show you how the solar cell is made. And we will show you some more advanced technologies called heat pumps and all that. As you are all engineers, I want you to have proper attention and get back to me on individual levels and group levels. Maybe we can get associated with you in future also for our projects. I will start my presentation here. We are established in 2003, and some of the major big companies which are with us is Jain Irrigation, which is Solar Heart, which is Greenforce and Sathvik. Jain had a MOU already with SCOST. We had taken some students also from here. They worked for some time with us, then now they are, some of them are the enterprisers and some of them are working in the government. I think 3-4 people, Bas and Afzal was one of the MTech also here. And that was in Jain for the micro irrigation systems. Now when we got solar blended with micro, nowadays we are doing directly from solar to this drip irrigation or the sprinkler irrigation or the rain gun. In that, what is happening, we are not using any energy, because the energy is cost, we are using only solar energy. So we are doing the projects in Kashmir, Ladakh and all over Jammu, Uttarakhand also. So I will talk about solar pumps. You guys have idea about motors, pumps, anything? Yes, sir. You have the ideas, no? There are different types of motors, pumps and all. But as I will just be concentrating only on solar, which is renewable. So I have brought one pump also here. So for the idea I want to show you, it has a motor as well as a pump. It's coupled motor and a pump. When we talk of dual means it can work on AC as well as on DC. Okay. So it does not need an inverter from DC to AC. Solar panels जो है वो देते हैं DC current. So it does not need inverter. We can straight away fix it with the and it can work. And the beauty of this pump, it is from the Mexico, Denmark. The cost of this pump is 4 lakh rupees. Okay. The pump can be a 1 HP pump, but it has a huge range. When I talk of huge range is that it has a maximum head of 600 meters. 600 meters, how many feet? 600 meters is how many feet?
No idea. One meter is 3.3 feet. 20, almost 20. 600 into 3.3. ये लगभग 1000 फुट. Now this building height is how much? This is all hardly 30 feet. तो 2000 feet हम पानी ऊपर ले सकते हैं by solar. So imagine the people who were living on those mountains and other places. तो 2000 feet ऊपर पानी लेना. This is a pump. It has a inbuilt controller in it itself. This is a cable in it. This can go straight away to DC or an AC. It is submersible. It is a submersible, or you can put it horizontal also. नाले में भी रख सकते हो, submersible भी रख सकते हो. इस पंप की कॉस्टिंग है 4 लाख रुपए. क्यों है इसकी इतनी कॉस्टिंग? क्योंकि अगर आप मान लो 300 मीटर आपको तार लेना पड़ेगा, वायर. If you put an electric motor and you take a 300 meter wire, उसकी भी कॉस्टिंग 2-3 लाख रुपए आ जाएगी. और फिर उसके ऊपर जो एनर्जी उस पर यूज होगी कितना खर्चा होगा. This is a pump. I will show the cross section of this pump also. It does not need any controllers. It has an inbuilt controller in it. It has a inbuilt helical motor in it. It has a helical pump in it, and the motor is also permanent magnet. Permanent magnet motors have more efficiency. This pump can go up to 300 meters head in 1 HP. I will show you. See, this is a. Excuse me, can somebody close the curtain blinds? Tasha, you graph ke same jiwan? Can anybody understand this thing? Sir, this is a graphical representation between the discharge and the head. Okay, very good. Discharge and the head. So when you say 200 cubic meter per hour, that is around 2 lakh liters per hour. Okay? And the head is up to the capacity of 600 meters. In solar में 600 meter head, it's not the ये कहने की बात है, but it's a big thing. So we have some pumps where 1 HP can go up to 240 meters. 1 HP pump. This one can go up to 240 meters, but a discharge of 1.5. Almost 1500 लीटर घंटे का हो गया दिन का. Solar, all the discharge are calculated in solar per day, liters per day. So दिन का approximately 15000 लीटर के करीब ये जाता है. ये solar pump का मैंने आपको दिखाया थोड़ा बहुत. Then we have some huge ranges in the pumps itself within the company. So this, I don't think so it is of your use. It is again with the head and the discharge, separate pumps and segments, all performance curves and all that. This is, we can play this. So can you please start the slideshow? Can see the big window. Yeah? Like we can start the slideshow and. Do you want to see the big window? Okay. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. See, we had recently brought a truck here. I was not knowing that you have a program here. I would have got it here also for the understanding of students. See there, if you can see, this is a cross section of the pump. ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये दो helical, वो pump है. I will take it back a little bit. ये क्रॉस सेक्शन है, ये भी क्रॉस सेक्शन है. इसी पंप का क्रॉस सेक्शन है जो हमने लाया है. ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन है इस पंप का. ये हेलिकल है, ठीक है. और नीचे इसमें कंट्रोलर है, सारा कंट्रोलर इलेक्ट्रॉनिक सारा नीचे पंप में ही है. और पंप जाता है अप्रोक्सीमेटली टू द डेप्थ ऑफ से 70 मीटर्स, 90 मीटर्स, 100 मीटर्स तक नीचे जाता है. और फिर वहाँ से ये पानी भी लेता है, और फिर ऊपर अगर 100 मीटर हाइट भी देना होगा वो भी देगा. 1 HP में बात कर रहा हूँ. The moment you increase the HPs, it can go up to the 600 meters. This is called a stage. 2 helicals is 1 stage. The pump itself is only this much. Then we have an empty space here. Then we have a motor and a controller.
Why we have given an empty space? Prime. Why we have given that? Prime. No, इसमें प्राइम की नहीं है. The empty space is because मोटर ऊपर घूमेगा helically, नीचे पंप घूमेगा helically, नीचे है what you call it a motor. So we had given just a shaft straight away, so that the helical movement इसकी कम होके normal centrifugal movement में आ जाए. That's why we had given a space, and that's 2 is staging. The more staging we increase, the more the pump can lift the water by means of solar. We are talking of only solar renewable. So this is the cross section of this. Then we have the control. Solar panels and types. So you must have been reading these from last 3-4 days. Solar panels and types. किसी को पता है solar panel बनता है कैसे? Anybody? Any idea? Solar panel किससे बनता है? किसी को पता है कुछ? जो semiconductor materials होते हैं. Semiconductor, ठीक है, semiconductor materials. So basically सिलिका को मोल्ड करते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में उसको ना ग्लास को ब्लो करते थे या कुछ करते हैं, सिलिका को मोल्ड करते हैं, सीड एक जाता है, उसको स्ट्रेच करते हैं, बनता है मोनोपर्क. वो जो पॉली है उसको ले आउट करते हैं, उसको कट करते हैं. मोनो की ज़्यादा एफिशिएंसी है. These are something like that. Monopanels contain monocrystalline solar cells with a single silicon crystal. Crystals grown in a lab and formed into a cylindrical shape called ingot. These silicon ingots are cut in thin discs and shaped into octagonal shapes. Process fits more crystalline silicon cells into a solar panel and eliminates waste. Poly का देखिए, poly solar panels or use silicon cells, but the manufacturing process is different. Poly में जो cutouts होते हैं ना, that can be also used. Mono में cutouts use नहीं होते हैं. जो film बनती है, जो layout उसका उठाते हैं, तो poly में we can use poly a bit cheaper and have only 2% less efficiency than mono. But then we in a mono or in a poly we have one more segment called bifacial. Bifacial is something which can have a reflectance also. It has a two-way, जो solar इस पे गिरता है, जो उसकी energy है, और जो नीचे से shadow reflect होता है. I don't know whether anybody is from the fruit science here. Any idea about fruit science? काचा मतलब युस यम्स गैर चूंट आसान खासान, हाँ? सारे ना वॉल्यूम है कि किम्स खासान, बाग किम्स गैर? चूंट बाग ना कैसी, हाँ? अशीत आग बोर्ड बार प्रॉब्लम ऐसा चूंट है, बन के चुन आसान चूंट वज़न गुमत की, साइड ऐसे साथ चूंट वज़न गुमत, बन के चुन आसान लाइट आमत की, इसमें आसान चूंट गुमत वज़न की. न्यूज़ीलैंड में they lay the white sheets and they get a reflectance light reflect as a light reflectors बना हुआ था, तिमन चुके साथ बन के थी वज़न साइड एंड थी वज़न हर साइड वज़न, and they sell it at a premium price. Now we got some trellising models, we got some other models here, जिनमें हमको help हो रहा है, Apple को पूरा light मिलता है, तो we are trying to do that. But इसी तरीके से solar में we have a bifacial also. Bifacial में हमको reflect light करेगी, double उसका efficiency मिलेगा. That's bifacial panels and a monitor. I think you have a look to this video. Get the idea how the panels are made. Advanced laser cell cutting technology. Cells are cut here.
is cell matrix procedure. ये सारा automation में है. No manual interference much. Then we send this stringer to the visual check. Stringer matrix में manufacturing में जो होता है. Stringer is sent for the visual check. They check the any deformities and they do the only meticulously properly जो approval के लिए जाता है वो automatically off से आगे जाता है. Then उसके बाद lamination and then laid on the panels. Trimming process, framing process. And then simulation test. Then labeling. ये आपके एक आइडिया के लिए था packing and transportation. So these panels can be from 10 watts to 525 watts, which are MNRE approved. There's a government agency, MNRE, which approves them, and these are used in day-to-day life. Now we have something called IoT, everywhere IoT is going. What is IoT? Internet of Things, or पता है IoT is Internet of Things. But how it is helping us in a day-to-day life? So you have social media, you have information on your phone. So nowadays training, teaching, everything goes through YouTube. But there is something where the technology plays is that you have the instrument which gets blended with IoT. For example, we talk of pumps only as the topic is about pumps. For example, we have existing pumps in our lift irrigation scheme. So when we are calculating the amount, we are paying enormous money to lift that water to the service reservoir. You know SRs, no? So we are paying huge money by means of on the energy I'm talking about, by means of electricity, by means of diesel. So gallons of liters of water up जाता है, फिर वहाँ से distribute होता है लोगों को. So have anybody thought जो हम पानी use करते हैं नलकों में waste होता है, how much it costs? इस पे कितना पैसा लगता है? इस पे state का कितना पैसा लगता है? जो बंदे income tax देते हैं उनका कितना पैसा लगता है? किसी को कुछ आइडिया है? किसी ये आपको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये आपको बिस्लरी वाटर से महंगा पड़ रहा है. शिशा ना आपके थवा गैरी आल प्यार आवश्यक साफ़ गंडस कंडस आप चुके हैं into drains. ठीक है, but it is very wrong and very bad also. Use water judiciously, please. कल को ऐसा टाइम आएगा पानी नहीं होगा and you won't be able to have vegetables, anything or anything. Now the companies are thinking on this, and what they have done is they have brought the equipments which can blend electricity with the motor, with the solar, or with the this thing geothermal. I don't know how many know about geothermal. And you can see that we have an equipment that can blend with the solar. That is called RSI, Renewable Solar Inverter. जो existing हमारे pumps हैं, उनमें हम RSI and a power blender देंगे. और जो आजकल स्कीम चल रही है ऑनलाइन ग्रिड, उसमें क्या हो रहा है? What is happening that जो पावर आप कंज्यूम करोगे फ्रॉम द ग्रिड और जो पावर आप जनरेट करोगे
from the solar panels, it balances. And your monthly bill is reduced drastically. Same way we have brought the pumps. We will do the lift irrigation in a daytime, and in the night time we will use the electric power. Or in that time when we have a cloudy, we will use 25% electric power, 75% solar. It balances. So it reduces our energy cost, it reduces our effort, and that's a power blender which has a remote monitoring, as well as you can do it, control the pumps on phone as well as SCADA. So this slide is only about that. Any doubts on this? So please, you can tell me now itself. कुछ idea आया what I said कि नहीं? कशी पर वजह तो थोड़ा फिक्र में क्या हुआ? हाँ? Power blend is a future. जो भी हम कर रहे हैं ना, यूज़ कर रहे हैं जिनके सोलर्स मस, इमेज जिनके सोलर्स मस इवन स्कीम, हाउस स्कीम्स जिनके, ताकि मुझे इस्तेमाल आप इन्वर्टर यूज़ ग्रिडर से कनेक्टेड, ग्रिड पे यूज़ पावर इवन च, बे यूज़ सोलर पे पावर जनरेट च करा, ये बैलेंस करा, ये सिंक्रोनाइज करा, ये चुचा ऐसे क्या कोई यूज़ सोलर ऐसे कुता पावर आ और अगर वह एक्शन यूज़ गसा कि सोलर च जनरेट गसा, ये रिवर्स गसा ग्रिडर्स तो ऐसे billing wasan. That is a blender actually. Same thing is in the pumps also, which we are using. That's application of Internet of Things. Atmosphere, solenoid valves. I don't know. Anybody talked on solenoid valves recently? ये continuous group है ना मतलब? तो आपने solenoid valves का पढ़ा कुछ नहीं? Solenoid automation में कुछ पढ़ा solenoid valves का? Solenoid valves की तो अच्छी मोबाइल ही थे, बाब शुद्ध 10 किलोमीटर दूर, अच्छे त्राउन कुछ sections आव उनकेस, कुछ sections पागल त्राउन, कुछ sections शामस त्राउन, मैं कैसे ना फल? It is possible ये चेस small land holding it should possible, बेच नज़दीकी ऐसा, मगर पंजाब में नेबर क्या च अच्छी 15-20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, ऑस्ट्रेलिया में 7 किलोमीटर दूर, मैं कैसे 7 किलोमीटर दूर pump throwing. So we have the valves which are connected with the internet, which are connected with our mobile phones, which are connected with our laptops, which can be programmed. Programmed means that on this specific time we need this thing, and it can be programmed with the weather station also. Huh? It is available. Yes, we are providing. What cost do we pay? You will get it for 30,000 rupees approximately from the Hunter Labs. We deal only with the top quality products. Do we have a subsidy scheme for these things? Subsidy, brother, there is no subsidy because we have not yet implemented or adapted the technology. The farmer has to adapt the technology, the government has to adapt the technology. And once you talk of subsidy, then nothing will happen. Because it, is a huge amount, sir. 30,000 is a huge amount, but the benefit it has, maybe it's more than that. Imagine the diesel you will spend, the energy you will spend to on the valve. स्मॉल फील्ड में मैंने बोला स्मॉल फील्ड में ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे फील्ड पे आपको 10 किलोमीटर दूर जाना होगा, डेली जाना होगा, दिन में 2 दफ़ा जाना होगा, तो यू स्पेंड 300 रुपीज़ पर डे. अगर बाइक पर तीन सर तो 7 रुपये 1.5 रुपये, तो 1 ईयर में आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ROI वैल्यू का. अब यहाँ पे क्या वैल्यूज कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं इस टाइम? होटल इंडस्ट्री में लैंडस्केप मैनेजमेंट में वैल्यूज यूज़ हो रहे हैं. होटल गाइस जो है तिम ऑन करान इम के तिम ऑटोमेटिक ऑन गसान पॉप अप गसान युस तिमन बाब छु तत गसान लैंड ये वाटरिंग तो पत गसान पानी बाब. These valves can even integrated with the your weather monitoring station. आपका weather monitoring station गेज करेगा कि कल आपका evaporative transportation rate कम होगा, ET rate, आपका कल dryness होगा, so we need more water, so it can automatically be programmed with that. So this is future. This is IoT तो सारे बोल रहे हैं, लेकिन कौन implement करेगा that we can see in down the line in future times. This is remote monitoring systems by SCADA. So we have one case study where a farmer used to drive almost 150 kilometers to just switch on and monitor his well and water for his field. And 150 सुबह 150 शाम को आता था, तो
वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं था, but then we have some system where we can connect it with a satellite, and it's no doubt it's chargeable, but he saved that rigorous movement जो उसको करनी पड़ती थी. So we implemented that. When I say we, I mean it's my principal company. So we implemented that through satellite, and his life became more easier. So that is what we talk of remote monitoring systems. We implemented it. We can even have the management where we can get the flow कि कितना एक पंप उसको पानी दे रहा है, कितना फ्लो से हम इस टेरिटरी में हमने कितने फ्लो से हमने. This can be monitored on your bedroom TV or on your laptop or on your office. Not only one pumps, you can have this connected with a cluster, 30 pumps, 20 pumps. That's called a SCADA manager. It has a library basically, backend library. So this is also going to be your future assignments when you go into either government jobs or in private jobs, and something which people will adapt in a day-to-day life in another 5-6 years time. So this is automatic irrigation scheduling, right? Automatic irrigation, but not only automatic irrigation, this is something where you get a data back. Automatic irrigation was solenoid valve, but in this you get an information, and the information is something which you can sell. You have 5 pumps installed, you have 3 fertigation tanks installed. You get the information that आपने इस फील्ड में इतना पानी दिया और इसका रिजल्ट ये आ गया, इस फील्ड में इतना फर्टिगेशन दिया, इसका रिजल्ट ये आ गया, and you will have the complete data on that. You get the information back. That is SCADA, and solenoid is where you get automized your fields. So it needs some technological knowledge about it. Technological knowledge you are going to train down the line to people. So you gain that knowledge, you browse on internet, you get yourself upgraded, get your curriculum updated, talk to your teachers. ऐसा तो नहीं होगा कि ये upgrade नहीं हो सकता है. Because जो मैं देख रहा हूँ ये this department is very new. I don't think so, not much. But you can talk, so you can note SCADA, and you can note solenoid valves. You can learn about the products. You can have it on your internet also. YouTube videos आप देख लीजिए, ऐसा कुछ rocket science तो है नहीं. Sir, any idea about the pricing of this system? Pricing of what? SCADA? This system, yes. Why you ask the pricing? I have the complete idea because I am selling it, I am buying it, I am importing it. Sir, because of that, यहाँ पे जो बहुत सारे farmers होते हैं तो उनके पास तो उतना सारा resource available नहीं होता है. I said where you have the land nearby. जहाँ पे आपको नजदीक जमीन है वहाँ पे नहीं. आप कोई लद्दाख करगिल गया है? हाँ, कहाँ गए हो आप? नोबरा तक गए हो? तो आपने लेह से नोबरा कितना किलोमीटर है? 130, 140, 200 किलोमीटर भी है. फार्मर पता है कहाँ पे बैठता है? लेह में बैठता है, उसका फील्ड नोबरा में है ना? Imagine that type of farmer, he will not mind spending money on automation. और कोई फार्मर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, he will also not mind spending money on automation. 30,000 का सोलोनाइड वाल्व है, पंप 70,000 का है, जो कनेक्ट होगा इसके साथ इरिगेशन फैसिलिटी के साथ. तो जो सोलोनाइड वाल्व है ना, ये कितने लीटर्स फ्लो करता है? इट्स अ वाल्व, ये पाइप पे लगता है, डिपेंडिंग 63 mm पाइप है, 90 mm पाइप है, ये वैरी करेगा 20 mm फ्लो कितना चाहिए आपको. I will show you some videos also, you will understand that also. Solenoid valves हमने यहाँ पे इनफैक्ट शालमोर में लगाए हैं 2-3 ऑटोमेशन, है ना? We have and moreover there's this cost is also upgrading with the automation. So you are PG students? Mix है. Mix है. Final year के कितने हैं? So PG PG final, huh? Maybe you will not get the chance this time, but others may get within 1 year. They are going to start the automation of their existing greenhouses, and they are going to start the automation of their fields. If they will not do it, you will lack the knowledge, you cannot implement it. So they have to do it, come what may, in a just span of within 1 year. I think tender are also finalized for that.
But in automation, I don't know whether they have incorporated their renewable energy, solar उन्होंने रखा है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा. और सोलर में भी जो हमारी युवा स्टूडेंट्स, यू शुड नो इट, जो हमारी यहाँ पे रेडिएशन है वो बहुत कम है, यहाँ पे उतनी नहीं है. So you need here the pumps which can work from 30 volts. 30 volts to 300 volts. Not the pumps which work from 100. So maybe we can have the pumps which work from 70. So we did some projects with the public health engineering here. We gave them a pumps from 30 volts, and those pumps were SQF 2.5, and those pumps only were costing around 2,80,000, only the pump. बाकी उन्होंने क्या किया वो एक्स्ट्रा था. But it gave the benefit to 10 districts with a scheme, 50 schemes were implemented on merely the 30% of the cost what they had kept for the electric pumping. और पिछले 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह those are working. इसमें फिर सोलर का कहाँ ये जो वाल्व्स वगैरह वो आप कंट्रोल करते हैं? नहीं, मैं सोलर पंपिंग की बात कर रहा हूँ. सोलर जो वाल्व्स है वो सोलर पे कंट्रोल नहीं होंगे, वो तो इलेक्ट्रिक पे होंगे. हाँ, क्योंकि वाल्व्स तो प्लेंटी होंगे ना, एम्पल. फिर नहीं तो आपको बड़ा सोलर सेटअप लेना है और उन वाल्व्स को सोलर पे कनेक्ट करना है. देयर आर डीसी वाल्व्स एज वेल एज एसी वाल्व्स बोथ. जो एसी वाल्व्स होंगे उन एसी वाल्व्स को यू नीड अ डीसी कन्वर्टर फ्रॉम सोलर पैनल टू अ कन्वर्टर और अ इन्वर्टर व्हाट यू कॉल इट, डीसी टू एसी. देन यू कैन कनेक्ट द वाल्व्स. कंजप्शन ज्यादा होती है कि किनकी? वाल्व्स वाल्व्स की कंजप्शन उतना नहीं है. ना, इट्स नॉट दैट. हाँ, द कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल ऑन वाल्व्स में आप टाइप्स है. वन आर ऑन ऑफ वाल्व्स, कट ऑफ वाल्व्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है. बट देयर आर वाल्व्स व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड ऑन अ प्रेशर वाल्व्स. प्रेशर जब इसका इंक्रीज होगा तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा. So there are some valves I will show you. This is called a dosing pump. You can see it a dosing valve also. This is used usually in a fertigation. आपको specific nitrogen देना है, specific potassium देना है in a liquid form. You can use this pump and you can give it a, you can program it कि इतने के बाद pump automatically off होगा. जब pump off होगा तो automatically line off होगी. This pump can be controlled with the IoT also. So this is just an idea briefing to all of you for the technology, and this all technology is linked with your renewable energy. So this is about irrigation and agriculture. But now I want some extra thing to convey you, that is about space heating, which is a need of all of us in every room. So can anybody tell me what does I mean by space heating? किसी को पता है? Space heating, like we can just heat up this space, like room. Yeah, that's simple. That's true. Space heating is that we want to have a cozy heating atmosphere in a room. We want to heat up to that level where we feel comfortable. أيش क्या करा कश्मीर में usually वैंकनस? हाँ? Congregation space heat करा, ये पांच personal का सान. बाकी हमाम शायद बेच करा AC वेसी शायद करा usually. अगर बुताई वाला हुआ हमाम से खर्च यूमान रुपये 100,000 रहता है. And हमाम से use करा 2% people. हमाम से 2%. Congregation normally it's सारी काम. But I personally am working on a technology where I want this space heating. It's a need of everybody. We want every home to have on a very nominal cost. We are talking with government to subsidize some products in a space heating. This is out of your topic, but as it is touched with the renewables, we are the only company which is presently working on a renewable space heating. So we want to heat up your room with the solar background, but we can do it only in the daytime. Night time में क्या करेंगे? So night time में हमारा वही power blend use होगा जो night time में वापस आपको with the this electric पे चलेगा. So when I talk of space heating, so what we do, we have two companies which are world renowned. One is Solar Heart and another is Danfoss. Danfoss is a $28 billion company
It is almost a budget of one big country. इतना इनका turnover है. And the solar heart is 1953 में ये company बनी है in Australia, and it is governed by the RIM USA. So they are the world leaders in the technology. This is something I want to show you. Solar integrated heat pumps. ये एक नया concept है जिसमें आप what you can do is to your heat pump, your solar geyser, and power consumption, and your normal bathroom hot water you can all get it through solar, and the costing will be very less. But obviously the initial cost is more, and we are working with the government to subsidize the product cost. For example, अगर किसी के पास 3 बाथरूम है घर में और एक कमरा हीटअप करना चाहता है, 3 बाथरूम का वो कितना लोड उसके गीजर्स लेते हैं, कोई आइडिया है आपको? वेरी गुड, कोई भी पता है 6 किलोवाट 2 किलोवाट के गीजर के साथ 6 किलोवाट. वरना अगर मुझे दबाए चेंज में भी सुई तुता गरम 4.5 वाट्स में, व्हाट यू विल डू? कब लगा रहे हैं वो बताऊंगा. क्योंकि ये सीधे इकोनॉमिक्स है, ये कॉस्ट, ये गो वर्किंग कॉस्ट. एक पची चे गीजर लागू, ये गीजर चुता है गसान कॉस्ट एक्स अमाउंट, बेच आते नाल के गसान, बेच आते गसान पता है एस्थेटिक्स. Aesthetics is a very important part in the engineering. इसने बाथरूम में शो भी डाला, खूबसूरत टाइल शासन टाइल एंड पैट लगा, याच लगा हॉरिजॉन्टली, नच लगा वर्टिकली, बेसिक स्पेस डिजाइन करा, where we are going to put a WC, where we are going to put wash basin, other things. You just only destroy कराना. What we do is usually now we get a heat pump. Heat pump is installed somewhere else, top of the building. Type of issue was one heat pump only 400 watts, and it gives 180 liters in 2.5 hours. I had the sheet liter go 3 liter heat geyser. 500 liter heat, monitor 3 geyser to make 300 lakh. So that watch power limit. And what is the technology? It's a reverse of refrigerator. Fridge na tha usme? It's a reverse of refrigerator. It's a hawa maze energy kara, but heat exchanger ka sound lagi. And with that heat exchanger, it gives it. Now, where is solar introduced in it? We can give 400 watt from any 2 or 3 panel solar say. But it has a compressor which takes, in first shot, it takes 1.2 kilowatt. So 1.5 kilowatt solar plant या 2 kilowatt solar panel लगाने से आपका heat pump चलेगा, और जो गर्म पानी है इसका, वो पानी आप सर्कुलेट कर सकते हो पूरे घर में, either through radiator system or through a floor heating system. Heat pump होगा हमें circulate करेंगे. Heat pump is your power source energy. This is your tanky. This is your heat pump. This is the solar. Similar to the steamer. ना steamer को boiler. Steamer से लगा electric kilowatt steamer अगर से as a tank use करित, heat pump से कुंजाई थाउ heat pump से पाँच है अगर से steamer input hot water दे, so guys as a tank use. मगर there is a challenge which we are facing right now is that heat pump हम दोनों में use नहीं कर सकते. फिर मैं आपको बोलता कल ही लगाओ सारे, क्योंकि जो रेडिएटर्स में या जो इसमें पानी जाता है फ्लोर हीटिंग में, वो सर्कुलेट होके वापस आना चाहिए. वाइल जो हमको बाथरूम्स में पानी जाता है वो यूज करेंगे. एंड सो व्हाई वी ब्रॉट दिस टेक्नोलॉजी इज दैट वी डोंट वांट टू वेस्ट द वाटर. हर कांच के स्नान करें 10 मिनट में आप थोड़ा याद है स्नान दे. अगर ती कैलकुलेट करियो इमन 10 मिनट में से पोस्ट दितमुत छना पीएचई डिपार्टमेंटस, दैट इज मोर देन 100 रुपीस. For the alarm which they use, for the energy which they take it. जो इंजीनियर्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है इकोनॉमी पे नजर रखना, और जो डे टू डे लाइफ में हमको इम्प्लीमेंट होगी टेक्नोलॉजी, जो हमको यूज होगा. आई एम 46 years old. I haven't seen
yet any of the technical staff coming forward to adapt the European technology. That's no one. To find one should I? So it's a debatable thing, but this is a technology which we are bringing. We have recently installed some of the good projects in. ये available है यहाँ पे? हाँ, yes. Yeah, we are telling. तो दिन में ही सिर्फ पानी गर्म रहेगा। Exactly, इसमें दिन में गर्म रात में सोलर में दिन में पानी गर्म रहेगा। सर हॉट वाटर तो सुबह 400 वाट आपका पावर लेगा ये शाम को 3 घंटे कितना हो गया वो? हाँ? 200 watt ये गटस, it is अगर तो शेयर गटस ये इलेक्ट्रिक पे चला, it's not even 1 unit. That's highly economical. ये जो इसमें है ये सिर्फ ये पानी भी गर्म करेगा और फिर ये भी नहीं देखो, we are using solar to heat up our water. Once we heat up our water, then we can send water to anywhere. We can do space heating, we can do bathrooms. सर फिर ये करेगा एफिशिएंसी कम अगर हम उसको बाथरूम यूज करें, दैट मींस जैसे आपने कहा कि No, you need वही तो challenge है ना, you need 2 tanks. One tank should be dedicated to the bathroom and another tank should be dedicated to circulation lage. double efficiency. Double efficiency, yeah. Otherwise 2 heat pumps. One dedicated to bathrooms and other one dedicated to space heating. But जो हम इसमें काम कर रहे हैं, we are blending it with the solar. Otherwise 400 watt पे तो आप सीधे इसको लगा सकते हो घरों में, वो तो कोई इशू ही नहीं है. लेकिन हम इसको सोलर पे लाना चाहते हैं ताकि ये टेम्परेचर चुनसा below 0 हु गैस पाने फ्लोर्स गसन पाने हीट अप. शाम 3 घंटे अदमिच रोजान ये क्या कहते हैं रेडिएशन हीट 3 घंटन हेकान करित. अगर शाम यूज शाम तक यूज एस करन 3 आवर्स तक 7 to 10 पता है कि इलेक्ट्रिक पे मोटर्स पे लगे ये ऑप्शन है ना. बेसिकली इलेक्ट्रिक ही तो है ना ये, मतलब यू कैन पुट सिर्फ सोलर पे डिपेंड नहीं है हम ये नहीं सोलर पे डिपेंड नहीं है. सोलर पे ब्लेंड कर रहे हैं हम. ऑप्शन नहीं ब्लेंड कर रहे हैं. ब्लेंड इज वी आर बैलेंसिंग बोथ. सोलर से क्या हो रहा है? पानी भी सोलर से आपको पानी गर्म हो रहा है ना, सोलर से एनर्जी मिल रही है और मोटर भी चल रहा है और हीट पंप भी चल रहा है. हीट पंप इसे मैं आपको दिखाऊंगा एक मिनट. दिस इज हीट पंप जो बड़ा है ना लंबा, दैट इज हीट पंप. इसका कॉस्ट क्या है? मैं वो कॉस्टिंग इसका महंगा है. वी आर वर्किंग ऑन द कॉस्ट टू सब्सिडाइज इट विद द गवर्नमेंट. 1 lakh 2 lakh It is 180 liters approximately 3 lakh. जिसका ना ये कॉस्ट एफिशिएंसी है. ये जो इसका जो पानी गर्म करने का मैकेनिज्म, ये जो इलेक्ट्रिकल हीट करना जो करता है, ये जैसे वो सोलर गीजर करता है वैसे करता है. देखो सोलर गीजर जो करता है वो कैसे करता है? जैसे थोड़ा सा मुझे पता है कि वही छोटे ट्यूब्स माइक्रो ट्यूब्स जो होते हैं, वेरी गुड, सीधे पकड़ लेता है, सीधे पकड़ एंड देन स्टोर्स इन अ टैंक. वो पानी घुमाता है ना. देन स्टोर्स इन अ टैंक. अगर -5 होगा वो काम करेगा? बहुत कम है. नहीं, काम क्यों नहीं करेगा? रेडिएशन तो बराबर है, मगर -5 में उसका पानी जो है वो फ्रीज होता है. जो ट्यूब्स है वो ब्लास्ट होते हैं, बर्स्ट होते हैं. मगर वो उसमें ये मत है शायद फोटो इसमें देखो जो सोलर गीजर है 2-3 टाइप्स की सोलर गीजर्स है. एक सोलर गीजर है जिसमें ग्लास ट्यूब्स होते हैं. वो इन ग्लास ट्यूब्स तो जब माइनस होता है टेम्परेचर वो फ्रीज होता है, पानी फ्रीज होता है एंड बर्स्ट्स. And then we have another solar heaters which runs on a glycerol. Glycerol is anti-freezer, वो फ्रीज नहीं होता है. ठीक है, तो पानी को गर्म करता है, उसमें हीट एक्सचेंजर लगता है. ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर से वो पानी को ट्रांसफॉर्म करता है हीट, और वो पानी किसी हद तक गर्म होता है. अब जब वही पानी हम हीट पंप को देंगे, हीट पंप उसको फर्दर गर्म करेगा, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी. और हीट पंप से जो पानी आउटपुट निकलेगा वो आप स्पेस हीटिंग में यूज कर सकते हो, और यू कैन डू इट फॉर द बाथरूम्स आल्सो. Heat pump is this device. One sec, I will show you. See, these are the collectors. ये जो बड़ा डिवाइस है ना यहाँ पे, वो वाला, that is a heat pump with integrated tank. उसमें टैंक भी है. गर्म करने वो सोलर गीजर है. सोलर गीजर के साथ हीट पंप है विद इंटीग्रेटेड टैंक. ये एक
डायग्राम ऐसा है जो हमने यहाँ पे किया है वो जो सोलर गीजर है या वो कैसे पानी को गर्म, वो सीधे रेडिएशन से करता है कि वो इलेक्ट्रिकल करंट? नो रेडिएशन से, प्योरली ऑन सोलर, दैट वर्क्स प्योरली ऑन सोलर, नो इलेक्ट्रिक इन दैट। कम टेंपरेचर विंटर्स में कैसे होगा? विंटर्स पे ग्लाइस्ट्रॉल पे चलता है वो, उसका ग्लाइस्ट्रॉल मूव होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ग्लाइस्ट्रॉल तो ठीक हो तो ये सोलर कलेक्टर है, इसमें कॉपर राइजर्स है अंदर से, ये सेक्शन है, आपको समझ आ रहा है एक नहीं? क्रॉस सेक्शन हाँ, ये क्रॉस सेक्शन समझ आ रहा है? किस चीज? ये पैनल का है, सोलर पैनल का। सोलर पैनल का। हाँ, जो ना जो गीजर में यूज होता है, ये लेयर्स, ये जो गीजर में यूज होता है, इसमें ये कॉपर वायर, ये कॉपर ट्यूब्स है, ठीक है। ये आपका इंसुलेशन है, ये आपका ग्लास में इंसुलेशन है, और ये आपका ऊपर से आपका ग्लास है। जो रेडिएशन से ये हीट पकड़ता है, वो कॉपर ट्यूबिंग्स में से ग्लाइस्ट्रॉल से ऊपर हीट एक्सचेंजर लगता है। ग्लाइस्ट्रॉल से कॉपर ट्यूब से हीट ऊपर जाती है, हीट एक्सचेंजर से वो ट्रांसफर करती है पानी में। दिस इज द एडवांस सोलर हीटर। दूसरा है जो ट्यूब्स पे सीधे पानी घूमता है, जो ट्यूब से सीधे पानी घूमता है, उसमें हीट उसने पकड़ी होती है, वही पानी आगे चल के सोलर में जो सोलर पैनल है उसका इसमें कोई रोल नहीं। नहीं, इसमें नहीं सोलर ये दो चीजें हैं, आपको मैं वापस देता हूँ। उसके लिए मैं समझ एक चीज है, ये देखिए, ये वाली जो पिक्चर है ना, इसमें प्योरली सोलर पैनल्स है। इसको सोलर पैनल से मोटर के लिए नहीं, नॉट ओनली मोटर, सोलर पैनल से आपका पावर जनरेट हो रहा है, और आपका हीट पंप का 400 वाट है टोटल। वो हाँ पंप को चलाने के लिए। हाँ, इट्स हीट, व्हाट इज हीट पंप बेसिकली, यू नो? जो गर्म पानी को सर्कुलेट करेगा। नहीं, don't take it wrong. That is, you don't know about heat pump. So you should ask me what is heat pump basically. One second. Heat pump is not a circulatory pump. Don't get confused. Heat pump is not a circulatory pump. Heat pump is, in simple language, is reverse of refrigerator. रेफ्रिजरेटर को कंप्रेसर होता है बाकायदा, हीट पंप को भी कंप्रेसर होता है बाकायदा। एनर्जी जो हवा से लेता है, एयर टू वाटर, हीट पंप लेता है। हवा से कंप्रेसर को एसी की तरह ऑल्सो यू कैन से, बट देन एसी में रिवर्स वाल्व होता है, हीट पंप में नहीं होता। हीट पंप में हवा से जो एनर्जी आती है, उसी एनर्जी से जो हीट जनरेट होती है विद फोर्स थ्रू कंप्रेसर, वो हीट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर टू द कॉइल और टू द टैंक जिसमें पानी हो, या उस पानी को जो उसमें घुमाया जाता है, दैट्स अ हीट पंप। इट्स अ रिवर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर्स क्या कर साथ, रेफ्रिजरेटर से हीट नेबर त्रावन, कूलिंग से अंदर कर, हीट पंप में कूलिंग नेबर त्रावन, हीट अंदर आना। इसमें लेकिन कंप्रेसर है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो बड़ा वाला यूनिट है ना, ये हीट पंप जो वर्टिकल खड़ा है, ये हीट पंप अत इनबिल्ट टैंक थे, एलिमेंट थे, हीट पंप 400 वाट पावर, अत 400 वाट पावर दिन बाय मींस ऑफ सोलर। जो इसने हीट एक्सचेंज की, पानी की हीट उसने लिया, वो उसने फिर उधर नहीं, पानी को दिया इसने हीट, पानी को हीट दिया। हाँ। दिया कहाँ से? लिया एयर से, मैं वही बोल रहा हूँ ना, एयर से। हाँ, एयर से। रेफ्रिजरेटर कितने दिवा अंदर कूलिंग, सारी कारण से ना रेफ्रिजरेटर तो ये इंजीनियर से कहाँ से सारी मुझे कितने दिवा कूलिंग अंदर, शायद कंप्रेसर आप लोग कितने की रेफ्रिजरेटर शायद कहाँ सारी मुझे कितने दिवा कूलिंग, हाँ, तला मैंने कितने बिठे शायद, anybody knows? इसमें प्रॉपर एक साइकिल होता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल जिसको हम कहते हैं। कंप्रेशन साइकिल होता है ना, यस। सर उसमें जो हमारे उसमें गैस भी होता है। स्प्रेड करता है उसको टेंपरेचर। सर वो सिंक से सर पूरे साइकिल में फेज चेंज होता है मटेरियल का, सॉलिड टू What is compression basically? कंप्रेसर क्या करता है? सर कंप्रेशन वेपर्स को कंप्रेस करके उनको लिक्विड बनाता है ताकि वो कैसे? अंदर जाए। By means of what? Force. It lets it pass through from big hole to small hole. एक valve With the use होता है। valve use होता है, exactly right. Valve use होता है, उस valve को जब compress किया जाता है with a force, तो एक energy generate होती है। वही energy either it can be transformed in a cooling form or in a heating form.
रेफ्रिजरेटर का उल्टा हीट पंप है। रेफ्रिजरेटर में ठंडी अंदर डब्बे में दिया जाता है, हीट पंप में हीट अंदर डब्बे में दी जाती है। मान लो सर बेसिकली रेफ्रिजरेटर में हमारा जो सिंक होता है, रेफ्रिजरेटर का अंदर वाला पोर्शन, हम वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करके उसको एनवायरनमेंट में देते हैं। हीट पंप में हम एनवायरनमेंट से लेके सिंक में अंदर देते हैं। एयर टू वाटर, हीट पंप में अंदर से। आई वांट टू शो यू जैसे जियोथर्मल में होता है। जियोथर्मल, यू हैव an idea of जियोथर्मल? तो उसमें भी हीट एक्सचेंजर लगता है। वो नीचे से पानी तो हीट नीचे से ही निकालते हो। अब जो आजकल की टाइम में आप लोग सारे इंजीनियर्स हो, लेथ्स जो हम पे लगती है 5 लेथ्स 10 लेथ्स लेथ करा कम, ये दिवा हीट के नेबर, ये दिवा के हीट नेबर। अगर ये हीट कैच कर कितने करो कैच, यूनिट चलान, फैक्ट्री चलान। मैं बस तो सारी इंडस्ट्रियल लेआउट्स पर आई थिंक सो, इट्स अ बिग फर्स्ट ईयर टॉपिक। हाँ, इंडस्ट्रियल लेआउट्स में पढ़े। So basically most of the students are non-engineering background. No, this is purely engineering. This cannot be taught to non-engineering. This is purely for the I student. myself am currently doing masters in information technology. Okay, So. but it can be of your help. Yeah, it can be of mine. Yes, because Surely is because हाँ, of because- IIT. IIT and all this. मगर इंजीनियरिंग में जैसे अगर कहीं कहाँ विजिट होते हैं कुछ इंडस्ट्री मज़न, you must have seen lot of lathes, lot of machines there. Yes, sir. And can you anybody think of the heat they generate while working? Enormous heat. So Motor. you can pass water. So in the previous presentation, they told us how to convert that heat into the energy, usable energy. They told, na? Yeah, very good. How they told? There was some, so there's some, what was that? Engine bag somewhere inside. उसको फिर wrap करके वो सब. That's an exchanger, na? मैं वही बोल रहा हूँ. You can direct that heat to the usable thing. That's an exchanger. This is happening new. Winko ने India में ज़्यादा implement किया building तिमन चुनाव इस पर green buildings. ये solar heat चिकित्सा, ये existing machine heat extract यहाँ करने, ये वहाँ use करने. तिमन चुनाव green buildings. For us मज़ो grounded energy, हुमिच energy, ये भी हर का चीज़ वहाँ use करने, तिम चीज़ dependent ज़्यादा electrics पर विंकेस किया. That's why they call them green buildings, green energies. Even this height जो आपका ये भी है क्या बोलते हैं इसको, renewable energy from the soil. I will show a small presentation on that also, if it will be the geothermal there. This is electric floor heating. ये तो सबों को पता होगी. मगर मुझे ये बताओ, ये electric floor heating हम solar से touch कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो छोटा ये कंपोनेंट है. बट इसको कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम एंड द थर्मल कैलकुलेशन. थर्मल कैलकुलेशन ये क्या करा ये या 10 बजे तक हम करो ये मगर कैलकुलेशन चुन कहाँ करा पता नहीं नफर खुला दरवाजा ये गर्मी होती है 1 फुट हाइट एम वॉल्यूम मीन्स कैलकुलेशन की recommend करा treat me your calculation properly, put 3 panels, your जो आपका existing हमाम है वो आपको convert हो सकता है in an electric हमाम on solar. No need to put it on this. दो हज़ चलो solar better, शाम से क्यों electricity पर use करें blend हो जाएगा. It is very economical. इसकी कितनी वाट है करती? ये जो 18 watt per square foot, 18 watts. And it is more enterprising. You note my numbers, anybody leaves the college, they can start their work from tomorrow. They can come to us, they can take a material, we'll train them, we'll train their staff, whoever wants to get it into this. And it is a daily earning for all people who will do. Every person in Kashmir and in Jammu also, there is also code. They need this. 18 watt per square feet है. 18 watt per square feet है. It is ये power ज़्यादा लेता है, लेकिन मैं वही बोला ना जब आपकी density ज़्यादा होगी, बंदर तभी तक हम बस में 18 watt per square meter. सो क्या करें? सो करें वायर दे.
मगर सु दिन एफिशिएंसी कहीं क्या फायदा सो आन फायदा कहीं I am talking about the company which is $28 billion company, Danfoss. You can browse it on this thing also. I don't know whether there is some video. हाँ वही ना इसमें है. Basically about this solar roofing, this floor heating system. तो basically winters में जब हमारी need होती है इस चीज़ की, then हम mostly देखते हैं कि diffused radiation ज़्यादा होती है उस टाइम पे, due to clouds and other things. Solar का. If you remember, I showed you a blender. Yeah, I know about the blender, but Power blender. Power consume blender more is like, energy. for example, you have a solar energy only 25%. But that time you will take 75% from the electric and make it work more efficiently. When you have a solar energy 70%, you take only 30%. If you want to run it on 100% efficiency, that's a power blend. And at present there is only one company which makes that. That is Grundfos Denmark power plant. So we are promoting that technology here. I want you to have some idea of this. You can just have a look. आपको नजर आ रहा है कि नहीं? It comes in a small boxes. कोई rocket science उतना नहीं है. Calculation of heated floor area is very important. Without this, if somebody jumps it, he will lose it. This all can be done on a renewable energy, solar drone. 10 पे 10 का कमरा होगा. So Typical Kashmiri question. अगर 10 by 10 का कमरा होगा, आपके पास गैस खर्च ठीक है? इसमें हाँ पे एनर्जी का तो पर स्क्वायर फीट 18 वाट का है. Very good. Go 1.8 kilowatt. It's not that much still. 2 kilowatt solar panel लगे, हम आमुक use को, मैं शुभ full dose करूँ. यही क्योंकि 2 घंटे चले, it will give a efficiency for 5 days, 5 hours. 2 घंटे चलो, 5 घंटे दिए efficiency. अच्छे से काम कर. तो that means 2.5 चीज जो है, हाँ अच्छे से काम करेगा. इसमें हमें फिर लगे कुछ कन्वर्टर लगा रहा हूँ पैनल के बाद वो आता है ना. Obviously, DC से AC कन्वर्टर लगाना जरूरी है. One case जो rooftop scheme है, मैंने ये इसलिए आपको दिखाया, there is a scheme going on by the government. इस पे ना सब्सिडी है. Instead of 3 kilowatt, one should go for a 6 kilowatts. 2 kilowatt है जो thermal heating का था, for the floor heating का था. 3 kilowatt हाँ? करेगा काम भी विंटर्स में. हाँ क्यों नहीं करेगा, क्या बात कर रहे हैं, करेगा काम. आप YouTube पे Danfoss टाइप कीजिए. आप मेरी बात सुनिए ना, आप गूगल में Danfoss टाइप कीजिए. यूरोप इज -30. होल यूरोप इज डूइंग Danfoss. $28 बिलियन कहाँ से आएगा इनका टर्नओवर? मैं सोलर की बात कर रहा हूँ, उस पे तो इलेक्ट्रिकल पे तो कर रहा होगा. नहीं, सोलर तो सिंपल है ना. सोलर अगर आपको गवर्नमेंट दे रहा है 6 किलोवाट और आपकी रिक्वायरमेंट है 1.2 किलोवाट, तो ये क्यों नहीं करेगा? आपको तो ये तो एसी करंट ही मांग रहा है ना. तो इसमें गाल करा उनके ना सोलर इंटीग्रेट विद द सोलर. You see now scheme which is on grid this line is on grid scheme. Mission by presentation this is that case. I think yesterday OS had come from JKDA Anwari. उसने बोला on grid scheme के बारे में. So वो तो यही scheme है ना कि आप 6 किलोवाट ले लो, 3 किलोवाट ले लो, depending on your requirement. मान लीजिए इसको फिर हमें उस इन्वर्टर पे चलाना है. इन्वर्टर पे चलाना है. शाम को, दिन में सोलर पे सीधे चले गए. शाम को आप इलेक्ट्रिक इसको यूज कर सकते हो, जो ग्रिड से आपको पावर आएगा. हाँ, ये मैंने आपको दोनों टेक्नोलॉजीज दिखाई. सोलर ड्रिवनिंग, एक मैंने आपको दिखाया हाइड्रोलिक जहाँ पे हम पानी को गर्म करके सर्कुलेट कर रहे हैं. उसमें आप पहले जमाने में रेडिएटर्स यूज करते थे, आज हम फ्लोर हीटिंग करते हैं. व्हाई वी डू फ्लोर हीटिंग टुडे इज बिकॉज जो हॉट एयर है वो नीचे से ही ऊपर जाता है, पूरे कमरे को जल्दी गर्म करेगा. Radiator should be aesthetics the current should that efficient के, so we do floor heating. If somebody has a choice, means radiator, तब से को radiator ही होगी.
कॉस्ट इज अगेन दोनों का किनका इन फ्लोर लेइंग और ये और नहीं हाइड्रोलिक इज चीपर पानी वाला सस्ता है नहीं मैं उसी में दोनों में एक तो फ्लोर में आपको पाइप लगाने वाली हाँ या तो रेडिएटर नहीं रेडिएटर तो सस्ता है रेडिएटर तो एक जगह करेगा ना ये कैसे कमरा कैसे गर्म होता है आपको पता है हॉट एयर मूव्स अपवर्ड्स कन्वेक्शन से कोल्ड एयर नीचे आता है तो यहाँ पे अगर रेडिएटर लगेगा वो यहाँ के एरिया को पहले गर्म करेगा फिर देखेगा आगे जब यूनिफॉर्म हीटिंग चाहिए आपको दैट मींस ऑल फ्लोर इज हीटेड अप उसमें ये कि रेडिएटर क्विकली एनवायरनमेंट को दर which uniform heating study should बनाए cozy atmosphere in a very small time. So we prefer floor heating by this thing hydronic. Then जिसको existing घर है, सुबह पुटाई हुई तब इसका तो ये better. ना ये electric. But when you have a solar, otherwise it is not that economical also. 1.8 kilowatt as you calculated for a room. So 2 hours if you use it, so you can't decide. as good as a blower हो गया almost हमारा. मगर blower is for one person, नहीं शुरू काम रहा, आप मुझे शना कर दिया वहाँ. Cost जो आप कह रही हैं महंगा. ये as मगर blower की और इसमें तो आसमान ज़मीन फर्क है. You use blower for 2 hours, it is you have consumed that energy. You use this for 2 hours, you can use this whole room for 6 hours then. It will remain warm for 6 hours. So इस पे और उसमें तो फर्क बहुत है, मतलब there is no comparison. I will show you some more videos, the projects. ये पहले Google Play. ये पुख्तर मॉन्स्ट्री है लद्दाख में, ठीक है। इन्होंने कभी 15 सेंचुरी से पानी देखा नहीं है। फीट पानी इनको चढ़ाना था नीचे से ऊपर, ये नहीं चढ़ा पाते थे विंटर्स में। अब आप में से कौन कौन एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा? साहब नौकरी ये YouTube पे वीडियो अवेलेबल है।
सेम पंप इसके कंधे पे है। आप ही ने लगाया इसका? हाँ आप ही ने लगवाया? ये एचटीसी पंप है। हमने हाँ हमने लगाया। कर मेहनत पाना सारी तवत बना रियल NGO तम कोर यमन गिफ्ट यमन टेक्नोलॉजी तथा वन नहीं कह कि तुम हेको आब और वात विद अ स्मॉल 1 HP पंप यमो कर दस्तार यमो कर अथन मन यमो आब वुचन हाँ ये नीचे इनकी औरतें आती थी यहाँ पे पानी उठाते थे इससे बकेट्स पामरूद नावस पामरूद नावस समझ ये देखो कहाँ लेना था इनको। अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक यूज करते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है नहीं तो तार का खर्चा भी देखो ऊपर तक कितना। अच्छा बिल्कुल ये इसकी ना दूर कौन इसके कारण तेरी अदरवाइज बाकी से क्योंकि वो कह पे 50 मूंग सक रोजान फ्रॉम लास्ट 800-900 years इमन वालियो गवर्नमेंट तुम वो मतलब स्ट्रिक्ट टू दैट। ये सोलर पे है यहाँ से आओ मीटर है ना 300 मीटर है यहाँ से ये हमारे पहले इधर पानी वहाँ दूर से आधा घंटा से नीचे पानी लेना पड़ेगा सब गुरु जी को वो बहुत मुश्किल है वो बहुत बर्फ गिरता है यहाँ से ज़्यादा बर्फ गिरता है बर्फ 2 फुट तक बर्फ गिरता है बहुत मुश्किल है अभी वो बस पानी यहाँ आ गया वो मुश्किल प्रॉब्लम सब आप करा इतना जाय ये जब करा जाय के वो कर आबी आप कहाँ से हाँ भारत के तरफ से वहाँ नीचे जाना पड़ता है बहुत तकलीफ हो रहा है बच्चे और बड़ा नहीं वो नीचे जाने का क्या होता है तकलीफ बहुत ख़त्म किया इसके लिए हम दोनों से यहाँ हमारे किचन तक पानी गया फिर हम खुदाम रुपा का उन्होंने के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आज यहाँ हमें पानी का बहुत तकलीफ है आज जो क्वेश्चंस अगर है कुछ डाउट्स है सर ये डोमेस्टिक यूज के लिए हो सकता है डोमेस्टिक यूज के लिए क्यों नहीं हो सकता है इफ यू कैन अफोर्ड इट। ये महंगा है ना डोमेस्टिक यूज सेंस दे रख रहा है। जो ये एरिया है ना सर शालीमार का ऊपर से यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है सर पानी की। वहाँ पे तो ये भी है प्लांट है ना वहाँ पे है लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम होती है अगर ये मतलब जो तो क्या जब आपका जब बोरवेल है तो क्या आपका है अच्छी यहाँ सर ये पेटल्स ये हार्मोन से आता है ना पानी आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है सर अच्छा इंसान 2 साल अगर ये सर 5-6 जो घर होंगे उनके लिए तो ठीक है कम्युनिटी हमने तो वहाँ पे दिया है ऑलरेडी you type your this thing sustainable water solutions by Grundfos हमने दिया है शालीमार में ऑलरेडी हमने 2 दिए हैं वहाँ पे लिफ्ट इरिगेशन में
ये जो आपकी अपनी कंपनी है उसका क्या नाम है? हमारी कंपनी 2 कंपनियां हैं, एटलियर से ATELIER एटलियर, दूसरा है सियाब सर्जमेंट्स ATELIER, ये दूसरा है सियाब सर्जमेंट SIAB, यू कैन चेक siabsurg.com वेबसाइट है, SIABSURG। सर इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? अगर 5-6 घर लगाएंगे एक साथ तो सब में अच्छा पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा, मगर लगाओगे किस पे? ये तो पंप और मोटर है, सोर्स क्या है? बोरवेल है, नाल है, कट पर ग्राउंड वाटर यू मीन टू से बोरवेल बोरवेल है करित बोरवेल करना, बोरवेल करने की कशिया तो यार सब्सिडी कुछ दिवा PhD दिवा 40,000 कम कौन सा along with panels हाँ ये सर ये मोटर सबमर्सिबल 40,000 अलाउ पैनल किसमें? सर अंडर सब्सिडी हमने सब रिसेंटली ये अंडर कुसुम सर अल्ट्रा हॉर्टिकल्चर का जो आता है ना हमारे हॉर्टिकल्चर के आई डोंट नो, मे बी आता होगा कोई, मगर ये वाला नहीं, दिस कॉस्ट 4 लाख। सर नहीं दूसरा है वो सिमिलर सर नॉर्मल पंप और टाइप नॉर्मल इसका दिस वाज इनिशिएटेड हियर बाय PhD डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने, उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्टों में 5 लगाए लिफ्ट इरिगेशन, कुछ जाए उस मशीन, कुछ जाए उस टेम्पल या कुछ जाए उसके तगत लोग मतलब दैट्स वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। सर अगर उनके पास जाए और जे में था गया ये जो जल जीवन मिशन था, उसमें हमने लास्ट ईयर 500 पंप्स लगाए। सर अगर हम PHE में जाएंगे जो हमारी लोकेलिटी है वो देंगे फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। क्यों नहीं देते? हमारे जो मतलब टेक्नोलॉजी, मैं वही तो आप सबको बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी अभी अडाप्ट नहीं कर रहे हैं लोग, तो यू हैव टू डिमांड फॉर दिस। जो PHE वाले आप एक काम करो, ये जो है ना आपका PHE का एग्जाम होगा कल से, AW उसको लेटर डालो सोलर पंप। 5-6 बार गए, इनफैक्ट हम जुनैद मुट्टू के पास भी गए, तुमसे बनाना बट दे व्हाट दे वुड बी जो AW है हम सब उनके पास गए, क्योंकि ये जो अपर एरिया है ना शालीमार अच्छी बात हमने दिया, लेक स्ट्रीट कॉलेज है ना सर, हमने ऊपर दिया, मुझे याद है, मैं खुद आया इंस्पेक्शन के लिए, साइट इंस्पेक्शन, ताकि उस महीदियत से हाँ शायद पुरानी बात नहीं मैं भी कल भी पता है, ताकि उस महीदियत से याद को पत्ती मो क्या था प्रॉब्लम आया सर। एनीथिंग एल्स, शुड वी कंक्लूड इट? हाँ ये वीडियो आठ मिनट बेटा या वक्त वही सोलर impression की it works on a sunlight, but I want to clear your doubts, it works on a lux, not intensity. ठीक है, this is Zanskar -20, ठीक है, and it's in a, you can just see how the water is coming. ये पंप है ये same pump है। सर पैनल वगैरह ऑफ कर सारा हमने दिया। अभी बहुत बर्फबारी हुआ है, फिर भी पानी अच्छी तरह से आ रहा है जी। ये एक हमने ये पुलवामा का है। I'm standing in my own orchard at Kashmir, village Chanpora, district Pulwama. Apples, they are my life. If I don't come to my own orchard and do my things, clean, plow this land myself, I feel ये incomplete. सारा हमने My फॉल day इसका is सोलराइज किया। And what you are seeing right now, this is my heart. हाँ बेटे, क्या करें? And the line of district Kashmir is blooming because of its horticultural economy. Majority of the horticultural farms in Kashmir, they are located at the remote places where getting the SOD irrigation is a challenge. Main problem is the grid connection during peak requirement of the water for the plants. Generally in Kashmir, main crop
is April. They are having peak requirement in the month of April and May. During December to February, there is a heavy snowfall in the Kashmir. Because of that, electric wires and cables, they are disrupted in the area. Due to that, in the month of March, irrigation is not assured. The water requirement for these apple orchards and other agriculture related things is very important. To get this water right at time is also very important. We had a lot of obstacles, lot of problems to our dear farmers. This is the horticulture economy which gets revolutionized or rotated by various adaptive technology. You want to move ahead, you have to adopt new technologies. We adopted that. We joined the hands with Grand Force recently for the water-based pumping systems. In this situation, solar pumping system has become a boon for the farmers. ये कहीं पे स्टोर नहीं कर रहा है is पानी, not on the borewell से directly to the electricity. field. Farmers Zero expenditure on the energy. systems. We visited his farm and we everything controlled by mobile. System of Grand Force. He lives which is here, actually the Barjula, largest farm. successfully. And the farm is where? Of 25,000 liters of Chanapura, Pulwama. Sufficient Almost for 70 his kilometers. We can take it agriculture orchard at Pulwama, Rajpura. I would like to say that right now we have installed the pump. It's working absolutely fine. We have started that pump at 8:30 in the morning, and it is almost 2 o'clock right now. That means 6 to 7 hours without any break. First class, I must say, paisa vasool. The Grand Force technology is very effective, very efficient. They are using the stainless steel 304 grade material, and the pump is AC/DC, which has a more efficiency than any other pumps. And I feel thrilled when I see water coming out of the borewell with almost zero investment on energy. That is solar. And water is the important ingredient for any farming. And to provide a precision farming, the farmers should adopt the solar-based water pumping technology to increase the yield and match the international standards. Being a farmer is my pride. क्योंकि उस टाइम पॉली और मोनो में बहुत वेरिएशन था प्राइस का, और एफिशिएंसी 2 या 3% की थी. इसके बाद स्पेस भी अवेलेबल थी. ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज. आई होप यू एंजॉय.